दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo के T3x 5G में Bgmi गेमिंग टेस्ट। साथ ही दोस्तों ये फ़ोन हमको गेम में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है और दोस्तों इस फ़ोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। दोस्तों इस फ़ोन का गेमिंग रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस फ़ोन की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों Vivo T3x 5G में आपको 6.72 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये जो फ़ोन है एंड्रॉइड वर्जन 14 पर देखने को मिलेगा। और बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो इस फ़ोन में आपको 6000 mAh की बैटरी, टाइप सी पोर्ट और 44 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। फर्स्ट कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो सेकंड कैमरा है वो आपको 2 MP का देखने को मिलता है, जिससे आप 4K पे 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा इस फोन का 8 MP का देखने को मिलता है, जिससे आप 1080p पे 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें इस फोन की परफॉर्मेंस की, दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और बात करें कि दोस्तों इस फोन के अतंतु स्कोर की तो 5 लाख प्लस इस फोन का अतंतु स्कोर निकल कर आता है। चलिए दोस्तों इस फोन की Bgmi ग्राफिक्स सेटिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं इस फोन की Bgmi ग्राफिक्स सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर स्मूथ पर आपको केवल अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कि स्मूथ पर आप इस फोन में 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। और बात करें वेलेंस की तो वेलेंस पे भी सेम सेटिंग देखने को मिलती है। और बात करें HD की तो यहाँ पर HD पर केवल 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। वैसे तो दोस्तों इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 60 FPS की गेमिंग के लिए बना हुआ है, लेकिन Vivo की तरफ से केवल इस फोन में आपको 40 FPS अनलॉक करके आता है। हो सकता है आने वाले टाइम पर इस फोन के अपडेट के साथ साथ इस फोन में आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं इस फोन में आपको जायरो का सपोर्ट देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो फाइनली थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये जायरो। तो यहाँ पर फाइनली आपको जायरो का सपोर्ट देखने को मिलता है और देखते हैं इस फोन की जायरो कैसा वर्क करती है। और चलिए दोस्तों पहला मैच को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये फोन हमको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि इस तरह की इस चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो फाइनली थोड़ी बहुत देर में हमारा पहला मैच स्टार्ट होने वाला है और ये फ़ोन हमको गेम में कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। और यहाँ पर गाइस हम अपनी फेवरेट गन ले लेते हैं AKM और देखते हैं ये फ़ोन कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। और M416 भी ले लेते हैं। वैसे तो दोस्तों इस फोन में आपको काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में केवल आपको 40 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अब आने वाले अपडेट के साथ इस फोन में आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही गाइस बताएंगे इस फोन की जायरोस्कोप कैसा वर्क कर रही है और ये फोन गेम में हमको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। वैसे तो इस फोन में मूवमेंट स्पीड काफ़ी बढ़िया बन रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक एनिमी आराम से मैंने किल कर दिया है। और यहाँ पर जायरो में मेरे को कुछ ऐसा डिले देखने को नहीं मिला है। इस फोन की जायरो एकदम एक्यूरेट वर्क कर रही है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ये बंदा जायरो के साथ मारा है। आराम से इस फोन की जायरो भाई एक्यूरेट वर्क कर रही है। जायरो के लेंस से इस फोन में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो गाइस गेम प्ले को एंजॉय करिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
Cover me! Reloading! You're about to win! Win! Team victory! In the lead. Nice shot! Game. Doesn't have a lot of time left. Red team. Down. Clear. Heads down. Reloading. Nice shot. Reloading.